Hello friends, welcome back to the new video from NEET to NET Biology. Today we will discuss about sexual reproduction. That is the second part of your first chapter of 12th biology. That is reproduction in organism. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के टाइप देखे थे एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में देखा था. आज की वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखेंगे. डिटेल में शुरू करने से पहले उसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि आखिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के गैमेट्स फॉर्म होते हैं, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स. अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तैरता हुआ वो मेल गैमेट है, जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं. वो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाएगा. अगर वो दोनों फ्यूज़ नहीं होते हैं तो वो अलग बात है कि वो दोनों एक दूसरे की याद में तड़प तड़प कर मर जाएंगे. समझ रहे हो. और अगर फ्यूज़ हो गए तो जाइगोट फॉर्म होगा जो कि डिप्लॉयड होगा एंड ये जाइगोट ग्रो होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा. एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा जो कि दोनों पेरेंट्स का कॉम्बिनेशन हुआ होगा. मतलब दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर कंबाइन हुए होंगे. तो चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में देखते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो कि मैंने पहले भी कहा था, आइदर बाय सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स. मतलब ऑपोजिट सेक्स के डिफरेंट इंडिविजुअल्स दो तरह के गैमेट्स फॉर्म करेंगे. दिस गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट. मतलब ये गैमेट्स फ्यूज हो गए जाइगोट बनाने के लिए, विच डेवलप्स टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म. मीन्स उसमें से एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो होगा. नेक्स्ट इज जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज. ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ and maturity in their life before they can produce sexually. It means sexually reproduce करने से पहले उसको certain stage तक grow होना पड़ेगा. उसके reproductive organs को certain stage तक grow होना पड़ेगा और वो grow होने के बाद ही उसे mature बोला जाएगा और वो reproduce sexually कर पाएंगे. ये grow होने के टाइम को हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं और वेजिटेटिव फेज बोलते हैं. और कभी कभी सिंपल लैंग्वेज में अभी बच्चा है तो ऐसा भी बोलते हैं. इस फेज को जुवेनाइल फेज बोलते हैं. और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस फेज ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. एंड आफ्टर जुवेनाइल फेज ऑर्गेनिज्म आर एबल टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन there are many events occur. These events divide in three groups. First one is pre-fertilization event, fertilization event, and last one is post-fertilization event. Means fertilization के पहले का events जो होते हैं, fertilization and fertilization के बाद क्या होता है वो बात है. In pre-fertilization two events take place. First one is gametogenesis and another one is gamete transfer. First one is pre-fertilization events. Pre-fertilization event means events that take place before fertilization. These are gametogenesis and gamete transfer. In gametogenesis, different types of gametes are formed, like male gametes and female gametes. Male gametes form in male reproductive organ and female gametes form in female reproductive organ. Next is gamete transfer. In this particular stage we discuss about how male gametes reach to the female gametes. मतलब male gametes female gametes तक कैसे पहुंचते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. First one is a gametogenesis. Gametogenesis means formation of gametes. Different types of organisms produce different types of gametes. For example,
if parent body is haploid, gametes are formed by mitosis, and if parent body is diploid, gametes formed by meiosis. Means if parent body is haploid, means and they will form gametes by mitosis, haploid gametes, and if parent body is diploid, 2n, they will form gametes by meiosis. An organism may be homothallic or heterothallic. Means if both the gametes are formed in a particular individual, that is called homothallic, and both the gametes are formed in different individuals, that is known as heterothallic condition. मीन्स अगर दोनों गैमेट्स एक ही ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होते हैं तो उसे होमोथेलिक बोलेंगे, और अगर दोनों गैमेट्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होते हैं तो उसे हेटेरोथेलिक बोलेंगे. गैमेट ट्रांसफर, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, एंड फॉर फर्टिलाइजेशन it is necessary that both the gametes come together for fertilization. For fusion, अगर दोनों gametes together एक साथ आएंगे ही नहीं तो फिर काहे का फ्यूजन, काहे का फर्टिलाइजेशन. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो मेल gametes एंड फीमेल gametes मस्ट वर्क टुगेदर, मतलब दोनों का एक साथ आना जरूरी है, और वो गैमेट ट्रांसफर से होता है. गैमेट ट्रांसफर in some organism both the gametes are motile. For example, algae, bryophyta and pteridophyta. What is the medium for gamete transfer? It simply means in algae, bryophyta and pteridophyta, gametes transfer by the water. This is about gamete transfer in lower plants and lower organism. In higher organism, pollination is the method of gamete transfer in higher plant, as pollen grain contain male gametes. Means in higher plants pollen grain contains male gametes which transfer by certain agents like animals, insect, birds and certain abiotic components. Next is fertilization. It results in formation of diploid zygote. Means after fertilization one zygote is formed which is diploid in nature. How this diploid zygote is formed? This diploid zygote is formed by fusion of two haploid gametes, one male gametes and one female gametes. Both are haploid and fuse and form diploid zygote. Are you following? In some organism, female gamete develop new organism without fertilization. Such phenomenon is called parthenogenesis. This can be asked in question in exam, that what is parthenogenesis? An answer is parthenogenesis is the process in which female gamete develop new organism without fertilization. Okay. Next is type of fertilization. There is two type of fertilization: external fertilization and internal fertilization. External fertilization means fertilization take place outside the body. Example of this is bunny fish and frogs. And internal fertilization is means fertilization take place inside the body. Example is higher plants and animals like human, in which zygote and fertilization take place inside the body, inside the female organism. Post fertilization events. The events take place after zygote formation is called post fertilization events. Zygote developments depend on two things. First one is type of life cycle of organism. Means
which type of life cycle the particular organism follow. Either they follow haplontic life cycle or they follow diplontic life cycle. नेक्स्ट इज द एनवायरनमेंट इट इज़ एक्सपोज टू, मतलब वो कौन से एनवायरनमेंट में है उसके आधार पर जाइगोट डेवलपमेंट होगा. फॉर एग्जांपल इन algae and in fungi it develops a thick wall around it to resist desiccation and damage and undergo a period of rest. Means after formation of zygote they form thick wall around it and go into the resting period and develop in a whenever condition will be favorable. मतलब जब कंडीशन फेवरेबल होगी तब वो ग्रो होगा, तब तक के लिए वो रेस्टिंग पीरियड में चला जाएगा. ऑन अदर हैंड इन ह्यूमन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ zygote it continuously divide and redivide and form new organism without any resting period. If organism showing haplontic life cycle zygote undergo meiosis, will in organism showing diplontic life cycle undergo mitosis. Haplontic means most of the stages in life cycle are haploid, where in diplontic life cycle most of the stage in life cycle of particular organisms are diploid. In haplontic life cycle zygote divide in by meiosis and form haploid organism, where in diplontic life cycle zygote divide by mitosis and form diploid organism. Then zygote develops into an embryo. This process known as embryogenesis. And embryogenesis involves 3 steps. First one is cell division, second one is cell enlargement and growth, and third step is cell differentiation. In cell division cells continue to divide. In another step cell enlargement. In this stage cell getting large means cell बड़े होंगे और ग्रो होंगे. In last step cell differentiation means different type of cell will form. Means you can see in this picture that first embryo getting large and after some time they form different organs. You can see here. Now on the basis of zygote development animals divides into 2 groups. First one is oviparous animals and viviparous animals. In oviparous animals zygote development occur outside the body and they are egg laying animals, for example reptiles and birds. On other hand in viviparous animals the zygote development occur inside the female body and they give birth to the young individuals. It means the zygote development in viviparous animals occur inside the body and they give birth to the new individuals, not the egg individuals. For example mammals. As we know that in mammals, if we talk about plants, in plants zygote is formed inside the ovule where it develops into embryo. Then ovule become seed and ovary into fruit. Means in plants zygotes develop inside the ovule and develop into embryo and the ovule become seed and ovary become fruits. Means जो ओव्यूल्स है वो ग्रो करके सीड बनेगा और जो ओवरी है वो ग्रो होके फ्रूट बनेगा. ओके, आर यू फॉलोइंग? एंड द जर्मिनेशन ऑफ सीड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स. मीन्स फिर जब वो फ्रूट में से सीड निकलेगा और सीड ग्रो करेगा उसमें से न्यू प्लांट प्रोड्यूस. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एनिमल्स एंड विविपेरस एनिमल्स. In oviparous animals, animals lies fertilized or unfertilized egg, where in viviparous animals they give birth to the young one, where in oviparous animals eggs have cell and on the other hand
viviparous animals don't have cell. And the examples of oviparous and viviparous animals are here. You can see in the picture and recognize the examples of oviparous and non-oviparous animals. And now let's see the difference between sexual reproduction and asexual reproduction. The advantage of sexual reproduction is it gives highly genetic variability and facilitate the adoption and speed up the evolution. Means it gives speed to the evolution. The disadvantages of sexual reproduction is it is energy consuming, require more resources, and usually sacrifice the fitness of one sex to the other. Means किसी वन ऑर्गेनिजम्स की उसमें फिटनेस सेक्रीफाइस होती है. Now let's see the advantages and disadvantages of asexual reproduction. Usually asexual reproduction को मैं सीला बोलता हूँ क्योंकि उसमें ऑर्गेनिज्म सीला जैसे होते हैं. जैसे सीला बोलती है कि मुझे और किसी की ज़रूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊँ. Are you following? मतलब this type of organism doesn't require partner for reproduction. They reproduce individually and produce new offspring without involvement of partner. Okay, this is the main point and remember that. If we talk about advantages of asexual reproduction, it saves the energy, countership is non-issue, and greatest increases in fitness of each individuals. मतलब individuals की fitness increase होती है asexual reproduction से. And disadvantages of asexual reproduction is low genetic variability, adaptation is difficult, and retard evolution. Means evolution को रोक देता है. So this is all about sexual reproduction in organism. Here we completed our first chapter of 12th biology, that is reproduction in organism. Thank you for watching. Thank you for support. Please like, share with your friends, and don't forget to subscribe. All the best.